everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and today's subject of PYQ series is your offshore drilling and production practices. Okay, so today's subject is offshore. We are taking for the PYQ series. Okay, so आज का सब्जेक्ट हमारा ऑफशोर है और इस ऑफशोर सब्जेक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे आए हैं, ठीक है, वो सब लोग वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ सीरीज में. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विच इज रिलेटेड टू योर ऑफशोर. सो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, इन दिस लेक्चर वी आर कवरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑफशोर विच हैज बीन कम इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ GATE 2016. Okay, so you will see the question number 1. You will see the question number 1, the three translational motion of the floating vessels. Okay, so what can be the three translational motion of the vessels? Okay, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द वेसल्स के कौन से हैं इन तीनों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से. ओके, सो वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द राइट ऑप्शन which has your right or correct translational motion of your vessel. Okay, तो वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि व्हाट अबाउट द मोशन सर, वेसल्स का मोशन होता क्या है वो मुझे आप सर पहले बता दीजिए, देन हम बाद में देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या है या दूसरा कोई और क्या है. ठीक है, सो वी विल सी फर्स्ट व्हाट अबाउट द मोशन, देन आफ्टर और लेटर वी विल सी व्हाट अबाउट द ट्रांसलेशनल एंड व्हाट अबाउट द अदर काइंड ऑफ मोशन. ओके, तो वो वी विल सी दैट, सो नो प्रॉब्लम. तो हम लोग बात करते हैं सर सबसे पहले मोशन की. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मोशन ऑफ द वेसल्स. वो जो कि फ्लोट कर रहा है, कोई भी वेसल्स अगर समुद्र में, ओशियन में फ्लोट कर रहा है, सो वो कुछ ना कुछ मोशन रखेगा जो कि मोशन लगेगा मेरा वेव और विंड की और करंट की वजह से. ठीक है, सो नाउ वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ द वेसल्स इन द ओशियन, इन द सी. सो नाउ यू विल सी दिस इज योर कंप्लीट काइंड ऑफ मोशन दैट द वेसल्स हैज which is your floating in the ocean. Okay, no problem, they are complete, but I am not going to मैं इस पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं भी इसकी बात नहीं कर रहा हूं. I want to show you graphically all the motion, then I will see these particular pictures. Okay, now you will see in the screen, if ship is moving forward and ship is moving backward, this is your one kind of motion. Okay, and this is your like a translational motion or linear motion. Okay, no problem. So this motion is called your surge. Okay, this motion is your surge because this motion is moving backward and forward, or this motion is called your surge. So now you will see if your ship is moving backward and forward, so this motion is called a surge. If your motion is moving backward and forward, means moving backward and forward, this motion is called your surge. This motion is called your surge, like that. Okay, no problem. You can see हमने बात कर ली है सर्ज मोशन की. नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट अबाउट द अनदर मोशन, और लाइक यू कैन से इन द स्क्रीन, यू कैन से ग्राफिकली. ओके, सो दिस इज योर शिप एंड शिप मोशन इज योर लेफ्ट एंड राइट. ओके, लेफ्ट एंड राइट मोशन. सो बिकॉज ऑफ वेव, बिकॉज ऑफ करंट, तो शिप मोशन इज लेफ्ट एंड राइट, एंड दिस इज ऑल्सो लिनियर मोशन. ओके, दिस इज ऑल्सो योर ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो नाउ you can see this motion left and right is called your sway, and you can see here translational motion is your left and moving left and right, moving you can see moving left and right, this is your sway, no problem. Okay, now we will see another translational motion. Means what? Translation मतलब linear motion. What about the another kind of linear motion? You can see the ship from a different angle. This is your ship, and ship is moving up and down because of wave and current. Okay, so this is also a linear motion. This is also a translational motion. So you can see up and down motion is called your heave, and you can see translation motion up and down, moving up and down is called your heave. No problem. So these three motion your translational motion, or you can see these three motion is your linear kind of motion. No problem sir, no problem. So मुझे यहाँ पे एक translational motion तीन होते हैं वो मुझे पता चल गया है. So I know in this particular question till now कि there is a three kind of translation motions that I got the point. No problem. So now let's talk about another kind of motion. Okay, sir, another kind of motion कौन से होते हैं सर? यहाँ पे मुझे ये तो पता नहीं चल पा रहा है. Okay, no problem. So I will see the another kind of graphics. Okay, so you can see
this is your vessels. If you use this vessels, you are seeing from the you can say top side, so your motion is moving like that, your motion is moving like that. Okay, so it means your motion is moving like that, so this motion is called your heave. Okay, so this is your linear motion or not? Not this time ये linear motion नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं है, इसका मतलब ये कोई और सा मोशन होगा। तो ये रोटेट कर रहा है क्या? यस। तो मैं इसको रोटेशनल मोमेंट बोल दूं क्या? यस मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ से देखने पे मुझे ऐसे टिल्ट हो रहा था, तो इसको मैं बोल देता हूं रोटेशनल मोशन, और इसका नाम मैं दे देता हूं यू। तो यू कैन सी यू टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, यू कैन सी हियर। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, बिकॉज लिनियर की बात और ट्रांसलेशन की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं अनदर काइंड ऑफ मोशन की। ओके, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं शिप को देखूंगा किसी और एंगल से, तो मुझे क्या दिख रहा है? ये सिर्फ टिल्ट हो रहा है ऐसे, ये सिर्फ टिल्ट हो रहा है ऐसे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये टिल्ट हो रहा है ऐसे, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफिक्स। ओके, सो नाउ दिस शिप इज मूविंग लाइक दैट। ओके, सो इफ दिस शिप इज मूविंग like that, like according to or like taking a reference of this particular line, so this motion is called your pitch. So this motion is called your turning forward and backward, turning forward and backward. You can see turning forward and backward. So this motion is called your pitch. No problem. Okay, if you will see another kind of motion, means another kind of rotational motion, so then you can see in the graphics turning side to side, turning side to side means turning side to side. So that rotational motion is called your roll, turning side to side. So it means a ship can have a motion or degree of freedom to move here and there is like 6 kind of degree of freedom. Okay, means 3 degree is your translation, mean linear kind of motion, and 3 can be your rotational, and total will be 6 degree of freedom a ship can have. Okay, means 3 surge, sway, heave, and the rotational means roll, pitch, you. Okay, no problem. So now the question is that many question has been framed according to this concept, and many concept आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं। तो यहां पे आप लोग देखिए, द 3 ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग वेसल इज दैट। सो आई नो ट्रांसलेशन मोशन इज दिस, आई नो ट्रांसलेशन मोशन इज दिस, सर्ज, स्वेव, हीव, सर्ज, स्वेव, हीव। सो ऑप्शन 3rd विल बी योर राइट आंसर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। सो ग्राफिकली आपने चीजें देख ली हैं, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यू गॉट इट द पॉइंट, नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन इज दैट, so this is jackup rigs are typically used for offshore drilling when the water depth in the range is, okay, I'm telling you very beautiful thing. So a lot of vessels or drilling vessels or production platform you are having in the offshore, that's not a problem. ओके, आपको पता है जैकअप है, कैंडीफ है, लाइक स्पार है, टीएलपी है, ड्रिल शिप है, सेमी सबमर्सिबल है, ठीक है, और ग्रेविटी प्लेटफॉर्म, और यू कैन से फिक्स प्लेटफॉर्म, और यू कैन गाइड टावर प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर हैविंग, नो प्रॉब्लम। मेरा सजेशन आपसे ये है, आई एम सजेस्टिंग टू यू कि यू मस्ट रिमेंबर एंड यू हैव टू लर्न ऑल द वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ ऑफ ऑल द वेसल्स, बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे जनरली क्या लगता है, because I am thinking that कि generally the questions which is coming from the offshore or like day by day or like every year, तो you will see कि that is related to your water operating depth. Okay, तो because यही एक offshore का जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हर एक वेसल्स का वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ क्या है। सर ये मैं समझ में नहीं आ पा रही है बात कि आप बोल क्या रहे हो, मतलब ये वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ क्या है, क्या ड्रिलिंग डेप्थ है क्या है, या नो, that is not a drilling depth. Okay, I'm telling you, suppose this is your land area, okay, and this is your what, ocean area. Okay, now this is your water, I am denoted by the blue color because water is blue. Okay, सुना होगा ना, ब्लू है, पानी ऐसा कुछ करके। चलिए, तो ये आपका एक पानी है, ब्लू है, ठीक है, और ये आपका लैंड है। अब आप बोलोगे लैंड ग्रीन क्यों है? चलो घास फूस है यहाँ पे इसलिए मैंने बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं।
हम बात कर लेते हैं कि मुझे ऑफशोर में ड्रिलिंग करना है. आई वांट टू ड्रिल इन द ऑफशोर एरिया. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट, सपोज माय ड्रिलिंग लोकेशन है ये वाली. तो यहां पे जो वाटर की डेप्थ है यह तो बहुत ज्यादा है. ओके, सपोज द माय ड्रिलिंग लोकेशन इज दिस, सो देयर इज अ हाई वाटर डेप्थ. ओके, नो प्रॉब्लम. इफ माय वाटर ड्रिलिंग पोजीशन इज दिस, सो दिस इज वेरी लोअर, very less water depth. So it means whatever the drilling rig can I can use here, that will not maybe possible. I can not use here. Okay, so maybe the possibility is that कि जो vessels मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो यहाँ पे काम ना करे. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कितने डेप्थ तक ड्रिल कर सकता है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो कितनी डेप्थ तक ड्रिल कर सकता है. मान लो कि ये वाली वेसल्स भी मेरी 5000 फीट तक ड्रिल कर रही है और ये वाली वेसल्स भी मेरी 5000 फीट तक ड्रिल कर रही है. ओके, 5000 फीट यहाँ से कितना बैठेगा, थोड़ा ज्यादा बैठेगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं. ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सर कि मेरा ड्रिलिंग डेप्थ से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे मेरा मतलब है, माई मीन इज दैट कि मेरा वाटर का ऑपरेटिंग डेप्थ क्या है. व्हाट इज योर वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ मीन्स एट व्हाट वाटर डेप्थ यू आर हैविंग, वेयर यू विल यूज और ऑपरेट योर ड्रिलिंग वेसल्स और ड्रिलिंग rig, okay, in the offshore or in the sea environment. Okay, so water operating depth के according I am having different platform, different rig. ओके, और वो हर एक रिग का वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ और रेंज मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज जनरली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके, सो वाटर डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी वेसल्स और रिग्स, सो दैट यू मस्ट रिमेंबर बिकॉज दैट इज जनरली आस्किंग इन योर गेट एग्जामिनेशन. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस. आई एम गिविंग यू चार्ट और इन दैट चार्ट यू विल सी ऑल द नॉट ऑल द वेसल्स वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली दीज वेसल्स, सो दैट will be okay. ओके, हालांकि और भी चार्ट हैं मेरे पास जो मैं दिखा सकता हूं आपको, जो कि सभी रिग्स के बारे में मुझे वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ रेंज दे देगा, बिकॉज यहाँ पे कैंडीप का गिवन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैंडीप का गिवन है बट यहाँ पे फिक्स प्लेटफॉर्म का नहीं है, यहाँ पे गाइड टावर का नहीं है, यहाँ पे स्पार का नहीं है, यहाँ पे टीएलपी का नहीं है, यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि सी स्टार का नहीं है. सो मोर वेसल्स यू कैन हैव एंड दैट ऑपरेटिंग डेप्थ इज नॉट मेंशन इन दिस पर्टिकुलर फोटो, बट दैट यू मस्ट रिमेंबर ऑल्सो. ओके, बट यहाँ पे मुझे इनके ये क्वेश्चन जो है इनसे ही सोल्व हो जाएगा. सो आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर पिक्चर. ओके, नाउ यू विल सी सर, आई वांट टू टेल यू व्हाट वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ ऑफ which vessels, yeah, jackup rigs. He is talking about the jackup rigs. Okay, no problem. So there is a land rig, okay, which can be used in onshore. Okay, no problem. Next, so smaller water operating depth with your drilling barge. Okay, and who has the greater depth as compared to this drilling barge, that is your gravity platform. And gravity platform is number of type of gravity platform that we have already discussed in our lecture series. And gravity platform also called a candeep, because candeep is also one of the gravity platform, and that will be very less water operating depth but greater than the drilling barge. Okay, so if the question is come कि मुझे क्वेश्चन अगर मिलता है कि ड्रिलिंग बार्ज का वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ बताइए, तो बहुत कम होता है. मान लो वो होता है 30 से लेके 40, और यू कैन से 40 और 40 ही मान लो. ठीक है, 40 फीट तक मान लो. ओके, सो दिस इज वेरी स्मॉल रेंज और वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ ऑफ ड्रिलिंग बार्ज. Okay, next point is that sir, candeep or gravity is the same, you can say, and that water operating depth is, you can say, 300 feet. Okay, 300 feet. Okay, so this is your 300 feet, no problem. Next is your jackup rig. Jackup, you can say, operate at water depth up to 500. Up to 500 means this can be used in your 400, 450 or 300 or 200 or 250, like that. Up to 500 he is saying. So it means maximum range your 500, no problem. So this is your 500 feet. You listen, remember कि this is, I am talking about in feet, I am not talking about in meter.
Sometimes examiners will give the question in meter and तुम्हें एक अंदाजा हो जाता है कि हम लोगों को 500 के आसपास दिखेगा तो वो जैकअप है। अरे यार देख लो एक बार, वो मीटर में तो गिवन नहीं है, क्योंकि 500 मीटर तुम्हारा कहीं ना कहीं 5 या 15 1600 1700 फीट चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि दैट शुड बी गिवन इन यूनिट ऑफ फीट। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वेसल्स इज यू कैन से रिग इज यू कैन से सेमी सबमर्सिबल, तो दैट इज योर 10,000 माय डियर। ओके, 10,000 एंड द नेक्स्ट ड्रिल शिप योर 12,000। ठीक है, 12,000। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 1 मार्क्स क्वेश्चन। जैकअप रिग वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ, नो दिस इज नॉट, दिस इज फॉर ड्रिलिंग बार्ज, दिस इज वेरी जैकअप रिग, और दिस विल बी आई थिंक maybe another kind of vessels, no problem. So this will be your right answer. So now you can see my dear, so your right answer will be B, 50 to 500 feet, because 500 is used water operating depth in jackup. Okay, so jackup will be I think right answer, no problem. Now next question we are seeing a very conceptual question. Okay, हालांकि ये सबको पता होगा, लेकिन स्टिल मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगा जो आपकी चीजें शायद और क्लियर कर देंगी। ओके, सो आई विल टेल यू मोर concept that will be very helpful I think, और but still I know कि lot of students know about this concept. Okay, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो now you can see the question is that for a floating vessels match the correct pair of the group 1 and group 2 among the option given below. Okay, and he is telling us what about the G, what about M, what about your like B. So G is B center of buoyancy, G center of gravity, and M is meta center. Okay, so before that I am telling you very beautiful concept first. So now you will see, suppose this is your vessels. Okay, this is your vessels. I will take this particular point. Okay, now this is your vessels my dear, this is your vessels, and in this vessels you are having, there is a one line. Okay, one line, there will be your weight of this particular line which is downward direction, and your buoyancy force which is your upward direction. Okay, and because of this balance, this vessels is in equilibrium condition, you can say equilibrium condition. Now what happen if I'm tilting this particular vessels, if I'm giving the force or give wind forces or your like current forces giving from that direction, so the vessels try to move this direction. Okay, no problem. So this vessels will be like that, this vessels will be like that. So now what about the water will be like that. So this will be your main center line. Okay, no problem. So now just tell me in which direction from this center line, in this direction, because of this center line, this direction you can say displacing this amount of water, and in this direction this displacing this same amount of water. So buoyancy will be in middle point. Okay, now you will see the displacement of this particular vessels is higher in this side as compared to this side. So buoyancy will acting. Why? buoyancy हमेशा लगता ही इसलिए है कि मेरा वेट वो मेरा कुछ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जितना ज्यादा वेट वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही मेरा buoyancy लगेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते भी हैं कि जो लोग ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर लेते हैं वो लोग तैरने लगते हैं, क्योंकि उस पर buoyancy ज्यादा लगने लगती है। ओके, वही चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखोगे कि दिस साइड इज buoyancy एक्टिंग मोर एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इन दिस साइड यू आर हैविंग हायर डिस्प्लेस वाटर. सो नाउ योर buoyancy line will be shifting this side and that will be like this. Okay, this is your buoyancy line and this is your main gravity line, okay, or main center line. So you will see the meeting point, at what point these line are meet, so that is called your meta center. Okay, and this is your center of gravity. Okay, so now because of, listen me carefully, यहाँ से concept start होता है my dear, कि because of meta center location there are three kind of situation can be formed. There are number of situation can be formed and number of situation is generally 3. Okay, so यहाँ पे मैं बात करूंगा कि हो सकता है if you are tilting more, so what happen if you are tilting more, so your picture will be like that. Okay, this is your center line, means gravity point will be acting here, and you can say not acting here because maybe your center line maybe gravity point acting here, and because of buoyancy maybe this point
will act at the same point of gravity same point of center of gravity. So okay, so now maybe the situation is that my dear, this is your same point, this is your G, and buoyancy line will be moving this. Okay, so this is your G and which is meeting at this line, so that will called a M. Okay, so यहाँ पे मेरी बात समझ में ये आती है कि जो सेंटर लाइन को buoyancy लाइन कट कर रही है, वो कहाँ कट कर रही है? G से ऊपर कर रही है या G से नीचे कर रही है या G पे ही कर रही है? इसके ऊपर मेरा बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती है. ओके, इसी के ऊपर मेरी वेसल्स की स्टेबिलिटी डिपेंड कर जाती है. ओके, सो यहाँ पे आई एम टेलिंग यू कि एट व्हाट लोकेशन दिस buoyancy line is cutting to this particular center line. Okay, either the above the G, either below the G, or either same point of the G. So according to this particular intersection, your stability of your vessels will depends. Okay, no problem. The case number 1 I am taking. Suppose the case number 1 is this. Case number 1 is this. Means your buoyancy line is intersect your main center line is above the gravity. Means if you are reading from downwards to upward, you will read this particular GM. Okay, but here if you are reading this particular line from downward to upward, you will read first M and then G, means MG. Okay, so now this GM will be, if positive, listen, if positive means if you are writing GM, so G comes first, M comes later, so it's a positive. Okay, if you are reading from downwards to upward, because in these stability concept every time we will read from the bottom point is your K means keel lines, means at the bottom point of the vessels is called K. Okay, when I am reading from K to upward direction, so whatever the first word you will see, that you will write first. So if you am writing from G, MG, so MG there will be positive, no problem here. But if I am writing GM, because GM means G will come later, M is coming first, so it means this is your negative. Here GM is negative, so now here GM is positive. Okay, here GM is equal to 0. GM equal to 0. Okay, so now what I will say this three kind of cases has been formed. Now sir, what about the stability? You are telling me कि the location of M or GM it will depend your stability of the vessels. कहाँ stability vessels पे depend कर रहा है? ऐसे कैसे पता चल रहा है सर? GM पॉजिटिव नेगेटिव और 0 से क्या मतलब मुझे पता चल रहा है? I am not getting the main thing. Okay, I am telling you the main thing here. Okay, क्या है यहाँ पे मेन चीज? वो है जब तक, जैसे मैंने इस वेसल्स को और टिल्ट किया तो ये M मेरा नीचे आ गया, और मैंने टिल्ट किया दिस M पॉइंट इज दिस, और टिल्ट किया दिस M इज दिस, और टिल्ट किया M इज दिस. ओके, सो जैसे जैसे मैं टिल्ट करता जाऊंगा ये M मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस जब तक ये M मेरा G से ऊपर रहेगा तब तक ये वेसल्स मेरे वापस आने की ट्राई करती रहेगी. मतलब जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करूंगा, सो दिस वेसल्स ट्राई टू रिटर्न बैक टिल योर GM इज पॉजिटिव, मींस M इज अबव द G. ठीक है, और जितना ज्यादा मेरा डिस्टेंस रहेगा उतना ही फोर्स ये वापस आने में लगाएगी भी. ओके, जैसे मैं इसको टिल्ट करता हूं जी मेरा यहां से यहां तक है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, आई एम टेकिंग एग्जांपल. सो ये मेरा एक फोर्स लगाएगा अच्छा खासा टू रिटर्न बैक. Okay, this vessels is coming return original position or try to return original position. Okay, suppose I will give the more forces, so this vessel is going to this side, so this M will be at this point now, so this distance is 4 centimeter, so now it is also moving return back but with lesser forces, with कम forces अब लगाएगा रिटर्न होने में. तो एक पॉइंट वो आएगा जब ये G मेरा और M मेरा G पे कट कर जाएगा, this सिचुएशन, तो इस कंडीशन में ये वापस आने को ना ट्राई करेगा, ना ही ये वापस गिरने को ट्राई करेगा. ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं कि नाइदर इट्स मूविंग रिटर्न बैक, नाइदर इट्स डंप इनटू द ओशियन. सो ये मेरा एक क्रिटिकल इक्विलिब्रियम है भाई, इट्स ए क्रिटिकल इक्विलिब्रियम. ओके, सो आई विल से GM इज 0, सो आई विल से इट्स ए नाइदर इज रिटर्निंग बैक, नाइदर इज डंप इनटू द ओशियन.
ओके इस कंडीशन में इट्स ए ट्राई टू रिटर्न बैक. सो आई विल टेल यू दिस सिचुएशन इज इट्स ए राइटनिंग कपल. Okay, rightening couple forces is acting here. Means it's a try to be right side, or you can say a right location, right original position. Okay, next thing, थर्ड केस, जब एम मेरा जी से नीचे आ जाएगा मींस इसके बाद ये कंडीशन आएगी. मींस आफ्टर दिस कंडीशन केस थर्ड विल कम. ओके, सो नाउ जी एम विल कम बिलो द जी. इट मींस दिस विल बी नॉट रिटर्निंग बैक नाउ, दिस विल डंप इनटू द सी. ओके, सो आई डोंट वांट जी एम इज नेगेटिव. मैं ये सिचुएशन नहीं चाहता हूं. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट. सो इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट रिटर्निंग बैक, इट्स ए डंप इनटू द सी. सो दिस इज योर कॉल्ड ए ओवरटर्निंग कपल. ओके, ओवरटर्निंग कपल. ओके, ओवरटर्निंग कपल. सो दिस इज राइटनिंग कपल, ओवरटर्निंग कपल. इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइटनिंग कपल के लिए विच कंडीशन इज सेटिस्फाई. जीएम इज पॉजिटिव, जीएम इज नेगेटिव, जीएम इज जीरो, एंड दिस मैनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म, मैनी काइंड ऑफ ऑप्शन कैन बी फॉर्म. तो जीएम इज पॉजिटिव तो इट मींस राइटनिंग कपल, और यू कैन से राइटनिंग couple will form, and if GM is negative so it means overturning couple will form. Okay, now I think you got it. If GM is 0 so it means neither rightening couple will be there, neither overturning couple will be there. Okay, so now I think you got it, no problem. So now I am having like you can say I am having three picture for you, 1 2 3. Okay, so GM is positive, M is above the G, it means it's a positive kind of thing. It means GM is positive, it means GM is positive, it means it's a rightening couple, it means it's a stable condition. It's a stable condition. So M is above G, it means it's a stable equilibrium condition. It means M goes to 1. It means P goes to 1. P goes to 1, either this is right, either this is right. No problem. Next point is M is below the G. M is below the G. M is below the G. It means it's a overturning. It's a overturning forces. Overturning plus means it will be dumped into the sea. Okay. So this is your negative. Means GM will be negative. GM will be negative. Why? Because if you are reading GM, so you are coming from upward to downwards. But if you are reading here GM, so you are going upward, downward to upward. It's you can say positive and it's you can say negative. ओके, तो आई थिंक ये चीजें हो गया. ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो एम इज बिलो जी, इट मींस इट्स ए अनस्टेबल कंडीशन. मींस ये हमारा डंप हो जाएगा, सी इन्वायरमेंट में डूब जाएगा. तो ये मेरा नेगेटिव और यू कैन से अनस्टेबल कंडीशन है. तो आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि क्यू विल बी योर थर्ड. तो क्यू विल बी योर थर्ड. आई थिंक दिस विल बी योर राइट ऑप्शन. Okay, this will be your right option. No problem. Next चीज और देख लेते हैं. M is coincide with G. M is coincide with G. So now it will be neutral condition or it's a critical stable condition. So it means R goes to second. R goes to second. So I think definitely this will be your right answer. Okay, no problem. तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया आपका. तो ऑप्शन सेकंड विल बी योर राइट. ठीक है, so now this is all about the questions which has been come in GATE 2016 from the offshore technology. So these are the three questions. Okay, very beautiful questions you can say. मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मुझे क्योंकि जनरली पूछा जाता है तो इसलिए ये मैं बोलूंगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, और पहला क्वेश्चन था, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ही. तो 2016 में ऑफशोर से काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे. ठीक है, जनरली क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए तो अच्छा होता है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है. लेकिन क्वेश्चन अगर रटने वाला है, डाटा मुझे गिवन है और मुझे डाटा अगर याद होगा तो आई कैन सेलेक्ट द राइट ऑप्शन. एंड इफ द डाटा आई डोंट नो सो देन आई विल कंफ्यूज. ओके, तो वो क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते बिकॉज उसमें रटना मुझे पड़ता है. ठीक है, यहां पे मुझे समझना पड़ता है और समझ के आई कैन अटेम्प्ट 3, 5, 6 क्वेश्चन. बट इफ आई एम रट और इफ आई एम लर्निंग और रिमेंबरिंग द थिंग्स सो इट मीन्स मुझे वही चीजें अगर आएगी तो पता चलेगी, नहीं तो मुझे पता चलेगी नहीं. ठीक है, नहीं तो मैं आंसर नहीं लगा पाऊंगा. सो आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो मजा आता है भाई. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफशोर इनटू which has come in 2017. Okay, no problem. So this is all about today. Thank you. Have a nice day.